Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll start solving exercise 15C from chapter Similarity. So starting with question number 1. First question is MCQs and there are 5 MCQs. First MCQ A. In the given figure, AE is 5 cm and EC is 7 cm. Then area of triangle ADE is to area of triangle ABC is. Don't look at the options. We'll solve first. So we need to find out the ratio of the areas of two triangles. Area of triangle ADE upon area of triangle ABC. ADE and ABC दोनों similar होना चाहिए. Then we can use some property over here. ADE and ABC. By looking at it, we can say कि दोनों triangle similar है, right? DE is parallel to BC and AB is the transversal. So क्या हो रहा है? Corresponding angles form हो रहा है. So D and B दोनों angles equal होगा. Similarly, DEBC parallel, AC is the transversal. So ये दोनों angles equal होगा. So by AA criterion, ADE and ABC दोनों similar triangles होगा, right? ADE, ABC, D और B equal है. I have not drawn it properly, students. This is just for understanding, ठीक है? D and B equal है, E and C equal है. Now, ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides. Okay, so मुझे corresponding sides का value पता होना चाहिए या ratio पता होना चाहिए. Then I can easily find out the ratio of the areas. Okay, so यहाँ पे कौन से corresponding sides का values मुझे पता है. Let's see. I am given AE का value and EC का value. AE is 5 cm and EC is 7 cm. यहाँ पे मुझे AE या EC कोई दिख रहा है? Yes, I can see AE. AE के साथ corresponding side कौन सा होगा? AC. है ना? By now we know how to find out corresponding sides, right? If you are not clear with this, please refer to exercise 1 and 2 का solutions, that is A and B का solutions. Okay, it will become clear to you. So AE and AC दोनों corresponding sides है. If I know AE and AC का values, then I can just put it over here and find out the ratio of the area. Ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides. Corresponding sides AE है in ADE. Make sure you put it correctly. Okay. यही ट्रायंगल का साइड कंसिडर करना है और ये ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड. ओके, AE के साथ करस्पॉन्डिंग कौन सा है? AC. स्क्वायर स्क्वायर. ऑल राइट. AE is 5. AC will be 5 plus 7, that is 12. 5 का square 25, 12 का square 144, so 25 is to 144. Third option. Alright. So for A, third option is the answer. 25 is to 144. You just need to remember the property. So in case you don't know the property or you don't remember, refer to the link in description. We have already studied about this property in introduction video. Okay, so you can refer to that. So I'll repeat, the ratio of the areas of two similar triangles, दोनों similar होना ही चाहिए. Ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides. In other words, if I consider the areas of two similar triangles, the areas of two similar triangles are in proportion with the squares of the corresponding sides. क्यों proportion बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों ratio equal है. And when two or more ratios are equal to each other, they are said to be in proportion. Alright.
So now moving on to next MCQ. Next MCQ. B, if AD is equal to 5 centimeter and BD is equal to 2 centimeter, then area of triangle ADE is to area of trapezium DBCE is equal to. Again, don't look at the options. AD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BD दिया है 2 सेंटीमीटर, then area of triangle ADE is to area of trapezium, which is a quadrilateral, DBCE is how much? Area of triangle ADE and area of trapezium DBCE, ये दोनों एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है. We cannot get it directly. For that what we'll do, again we'll consider two similar triangles और उसके एरियाज को रिलेट करेंगे. Which are the two similar triangles over here? ADE and ABC, है ना? Angle D and angle B equal होगा. DE is parallel to BC, transversal. Same way E and C equal होगा, parallel lines, transversal, corresponding angles है. So if I consider ADE and ABC, then ADE में angle A and ABC में angle A equal है, common angle है ना? तो triangle ADE का A, triangle ABC का A दोनों equal है. ADE में D and ABC में B and ADE में E and ABC में C. इक्वल एंगल्स लिख रहे हैं हम लोग. ADE में A, ABC में A, AA पहले लिख लिया, देन ADE में D and ABC में B, D and B second and E and C remaining. ठीक है. So these two are similar. So I can say that area of triangle ADE upon area of triangle ABC, ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का मैं अगर रेशियो लूं, then it will be equal to the ratio of the squares of the corresponding sides. कौन सा corresponding sides consider करेंगे यहाँ पे? Based on the information that we have, ADE में AD, okay, ADE में AD, उसका corresponding side कौन सा होगा यहीं से पता चल जाएगा. first two AD के साथ AB होगा. If I would have considered DE, then DE के साथ BC. If I would have considered AE, then AE के साथ AC. All right, very easy. Follow this method. अगर ये naming proper है, then corresponding sides भी easily मिल जाता है. It will be equal to the ratio of the squares of the corresponding sides. Okay, so AD square upon AB square. Don't forget the square part. So AD is 5. Okay, 5. And AB हो जाएगा 5 plus 2, which is 7. So it will be 5 का square 25, 7 का square 49. Now this will help me in finding this. Okay, so over here, area of triangle ADE upon area of triangle ABC is 25 by 49. न्यूमरेटर में मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ही चाहिए. ओके, तो ये रिक्वायर्ड है, बट उसके साथ क्या रिलेट करना है? ये ट्रेपीजियम का एरिया. अब ये ट्रेपीजियम का एरिया मुझे कैसे मिलेगा? ABC में से अगर मैंने ADE निकाल दिया, देन ये ट्रेपीजियम ही बचेगा. ये पूरा ABC जो है, ओके, ये ABC में से मैं ADE, ये ट्रायंगल वाला एरिया हटा दूं. दिस एरिया आई रिमूव, देन आई एम लेफ्ट विद द ट्रेपीजियम. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एज इट इज इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में ABC में से मुझे क्या माइनस करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. That will give me area of quadrilateral DBCE. So area of triangle ABC
minus area of triangle ADE. ADE क्या है? न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाला 25 है, राइट? ABC क्या था? 49. Again ADE is 25. So that will give 25 upon 49 minus 25, 24. So 25:24. Fourth wala option. So for B, fourth option is the answer. Okay, 25:24. Third MCQ. See, in the given figure, AD is to DB is 2:5, then area of triangle ODE is to area of triangle OCB is area of triangle ODE upon area of triangle OCB. If the two triangles are similar, then the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides. So ODE and OCB दोनों similar होगा ही, of course. ODE and OCB में angle O and angle O equal होगा because they are vertically opposite angles. Okay. So ODE and OCB में angle O and angle O are equal. So OO, make sure it is named correctly, corresponding points के order में है. So that is what I am checking. Okay. O and O. ODE and OCB will be equal. D and C ये दोनों angles equal होगा. How? DE is parallel to BC. है ना? DE is parallel to BC. And DC is the transversal. So alternate angles हो गया. So ये दोनों angles equal होगा. Okay. EDO and OCB, that is angle D and angle C equal होगा. Okay. तो D के साथ C है corresponding. And last हो गया E के साथ B. Again alternate angles, DE parallel to BC. EB is the transversal. So this angle and this angle, right? So it is named correctly. All right. OO, then DC and then EB. All right. Corresponding sides कौन सा होगा? If I know corresponding sides का values or their ratio, then I can easily square it and find out the ratio of the area, है ना? So corresponding sides यहीं से मिल जाएगा. OD, OC. First to, then next to, DE, CB, and then first and last. Okay. OE, OB. So first to, next to, first and last. Okay. कोई भी values यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ भी ratio? No. I am given AD upon DB. Okay. So what I'll do? I'll find out DE by CB. ये ratio मैं find out करूँगी because this I can easily find. Let's see how. DE by CB. CB is nothing but BC, right? So DE by BC. अगर मैंने ratio भी find out कर लिया, then I know it will be equal to DE square upon BC square. है ना? Corresponding sides ये दोनों है. तो corresponding sides का square करके ratio लिया. और रेशियो लेके स्क्वायर किया वन एंड द सेम, क्योंकि स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस, राइट? तो बेसिकली आई नीड टू फाइंड दिस DE by BC. DE and BC belong to another pair of similar triangles also. कौन सा है? ADE, ABC. ABC है, DE है, ADE, ABC दोनों सिमिलर होगा. ADE में एंगल A, ABC में एंगल A इक्वल होगा, कॉमन एंगल है दोनों में. ओके. A D and B दोनों इक्वल होगा. They are forming corresponding angles, parallel lines, transversal corresponding angles. So D and B, D, B, correct. And remaining E and C.
If it is named correctly, it becomes easy. Corresponding sides: AD, AB, DE, BC, AE, AC. Correct. First two, next two, first and last, all right. Now ये DE by BC मुझे फाइंड करना है. Do I know any of the other two ratios? I am given AD upon DB. Okay, AD upon AB मुझे फाइंड करना है, लेकिन AD upon DB दिया है मुझको. AD upon DB, it is 2/5. AD upon AB क्या हो जाएगा? It will be AD upon AD plus DB, है ना? AD and DB दोनों को ऐड करें तो मुझे AB मिल रहा है. ऑल राइट. AD क्या है? 2 है. अगेन AD 2 है. DB क्या है? 5 है. So it will be 2/7. AD by AB will be 2/7. So DE by BC will also be 2/7. All the ratios will be 2/7. They are equal. They are in proportion, right? So DE by BC 2/7 है. यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. DE by BC 2/7 स्क्वायर कर लो. 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49. 4/49. 4/49. First option. Okay. So for C, first option is the answer. All right. Fourth MCQ. D. In the given figure, area of triangle ADE is to area of trapezium BCED is 25:39. Then AD is to BD is area of triangle ADE upon area of trapezium, that is quadrilateral BCED. It is 25/39 दिया है. We need to find out AD and BD का ratio. AD and BD. Okay. Directly नहीं मिलेगा. What we'll do is, using this, first we'll find out the ratio of the area of triangle ADE and ABC. Okay. Area of triangle ADE and ABC दोनों सिमिलर होगा. ADE, ABC. By now we know how. Okay. So ABC इसका जो एरिया है, it will be equal to area of ADE plus area of this trapezium BCED. Right? ये दोनों फिगर्स का एरिया मैं ऐड करूं तो ये ABC का एरिया बनता है. So एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल BCED. ये दोनों एरियाज को ऐड अप करके ये मुझे पूरा ट्रायंगल का एरिया मिलेगा. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अगेन ADE, BCED 39. So 25/25 plus 39, 64. So area of triangle ADE upon area of triangle ABC is 25/64. Okay. I can relate these areas का ratio with their corresponding sides का square. Corresponding sides कौन सा होगा देखते हैं. ADE है और ABC है. Okay. So I'll rewrite over here ADE and ABC. It will be equal to the ratio of the square of the corresponding sides. So ratio means something upon something. Square of the corresponding sides. Corresponding sides कौन सा होगा यहीं से पता चल जाएगा. first two. Square. Same way next to. DE square, BC square. And same way first and last. AE square, AC square. Okay.
I will consider this. Why? मुझे AD upon BD चाहिए, right? So this is quite close to AD and BD. Okay, BD नहीं है यहाँ पे, AB है, but I can easily obtain that. So ADE और ABC ये दोनों एरियाज का रेशियो क्या है? 25/64. So 25/64 is equal to AD square by AB square. I'll repeat what property we have used. The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides. So taking square root on both the sides, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे AD by AB. AD by AB is 5/8. AD by BD फाइंड करना है. AD by BD will be AD upon BD. I can write as AB minus AD. Correct? BD will be AB minus AD. AD क्या है? 5 है. AB क्या है? 8 है. Minus AD again 5. So that will give 5/3. So AD by BD is 5/3. Alright. So fourth option is the answer for D. 5:3. I'll repeat what we did over here was area of triangle ADE और area of trapezium BCED का ratio दिया था. So using that we found the ratio of areas of two similar triangles ADE and ABC. Okay, that was easy. एक बार वो मिल गया, then relate it with the corresponding sides. Okay, corresponding sides का square से relate होगा, right? Using the property. So AD square and AB square consider किया because I need to find out AD by BD. So AD यहीं पे आ रहा है तो ये consider करेंगे. Taking square root we'll get AD by AB. Once you get AD by AB, I need AD by BD. So AD upon BD will be AB minus AD. Put the values and solve, you will get AD by BD. Alright, which is 5:3. Last MCQ. E, in the given figure, angle BAC is 90 degree, AD is perpendicular to BC, BC is equal to 13 centimeter and AC is equal to 5 centimeter. Then area of triangle ADC is to area of triangle TBA is. We need to find out area of triangle ADC upon area of triangle DBA. ADC and DBA, ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो. फॉर दैट वी नीड टू रिलेट इट टू करस्पॉन्डिंग साइड्स. ओके, इफ यू नोटिस ADC and DBA, they are not named correctly. Okay, so first thing is naming it correctly according to corresponding points. Naming correct होगा तो corresponding sides भी easily मिल जाएगा. So this is the reason I always say check the naming if it is in correct order. ओके, सो यहाँ पे पहले हम लोग ऑर्डर में नेम करेंगे. देयर इज ट्राइंगल ADC. ओके, एंड DBA, ये वाला लेफ्ट वाला और राइट वाला. यू आर सपोज टू नो यहाँ पे तीनों ट्राइंगल्स सिमिलर है. ओके, तीनों ट्राइंगल सिमिलर होगा. हाउ? BAC is a right angle triangle. Okay, ये main triangle right angle triangle है. And I've already told you if you have a right angle triangle, पहले हम लोग ने ऐसा टाइप का सम किया है. So over there I already told you कि अगर right angle triangle है, ये right angle वाले vertex से अगर मैंने perpendicular draw किया on the hypotenuse, then the resulting three triangles will be similar to each other. सो ये दो ट्राइंगल्स एंड ये मेन ट्राइंगल तीनों एक दूसरे से सिमिलर होंगे. ओके, नाउ ये दोनों भी सिमिलर होंगे. सो परफेक्ट ऑर्डर हम लोग को ऑब्टेन करना है. यहाँ पे ADC में एंगल D 90 है. DBA में कौन सा एंगल 90 होगा? ऑफ कोर्स दिस एंगल, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC. ये दोनों लीनियर पेयर है.
So ADB and ADC. So एंगल D इक्वल है एंगल D दोनों 90 है। यहाँ पे ये दो एंगल्स बचे हैं, यहाँ पे दो एंगल्स। नाउ कीप इन माइंड ये एंगल ये एडजेसेंट एंगल से इक्वल होगा ही नहीं। Alright, it is not going to be equal to this adjacent angle. It will be equal to the other angle. So ये वाले एंगल से इक्वल नहीं होगा, ये ट्रायंगल से कोई एक एंगल इक्वल होना चाहिए, राइट? सो ये ट्रायंगल के बाजू वाले एंगल से इक्वल नहीं होगा, ये वाले एंगल से इक्वल होगा। कीप दैट इन माइंड, ओके? रिमेनिंग इसका ये एंगल बाकी है, इसका ये एंगल बाकी है, दे विल बी इक्वल। सो ADC एंड DBA में ADC में एंगल A जो है DBA में एंगल B से इक्वल है एंड रिमेनिंग ये दोनों इक्वल है। सो यू विल नेम इट इन दिस ऑर्डर, ओके? नाउ ADC करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देखते हैं। A के साथ करस्पॉन्डिंग कौन सा है? B। D के साथ D एंड D ये दोनों एंगल्स इक्वल है एंड C के साथ A। सो ADC BDA not DBA। Alright, order matters over here. So ADC and BDA. Corresponding sides, first two, next two, first and last, alright। now we'll see कौन सा sides का रेशियो हम लोग को मिल रहा है। AD BD, okay, DC DA and AC BA। we are given BC and AC। BC दिया है, BC this whole length is 13 centimeter and AC is 5 centimeter। so over here AC मुझे पता है, BA that is AB पता होना चाहिए, मिल जाएगा। This big triangle is a right angle triangle, so using Pythagoras theorem I can easily find out the other side। side 1 square plus side 2 square is equal to hypotenuse square, right? This will be the longest side, so AB square plus AC square is equal to BC square। AB square plus AC square is equal to BC square। the sides forming the right angle they will be side 1 side 2 and उसका opposite वाला side hypotenuse, okay? so AB तो हम लोग को फाइंड करना है। AC दिया है 5, BC है 13, AB 12 मिलेगा, okay? so 169 minus 25 that will give 144, so AB will be 12। so over here AB is 12 and AC is 5, so AC by AB हम लोग को मिल गया है। so AC by AB that is BA one and the same, it will be 5 by 12, right? ADC and DBA that is BDA, okay, it will be equal to AC upon AB squared। ratio of the areas of two similar triangles is equal to ratio of the squares of the corresponding sides। ADC में AC है and DBA में AB है, याद रखना है, वही ऑर्डर में कंसिडर करना है, okay? so AC square by AB square that will be 5 square by 12 square, 5 का square 25, 12 का square 144, so 25 by 144 that is third option। so E के लिए third option is the answer, 25 is to 144, all right।